Today we'll discuss about perform data entry using mass data entry and flow data entry. So business example will come up. You need to make a quite a few adjustments to your planned income statement, and due to some new information regarding supply chain issues in quarter 1, in order to do this, you can use mass data entry and flow data entry mode to make the changes as quickly as possible. ठीक है, अभी तक हमने एक एक रिकॉर्ड में ऐसे एंट्री करके देखा था, राइट? अभी हमको जैसे कि पूरा साल में या पर्टिकुलर मल्टीपल प्रोडक्ट्स में आपको या मल्टीपल अकाउंट्स में आपको एक साथ डेटा एंट्री करना है. ओके, सो हाउ विल डू इट, दैट पार्ट विल सी ओवर देयर. ठीक है, Okay. Yes. सो एज पार्ट ऑफ द टास्क फ्लो वही वाला स्टोरी हम ओपन करेंगे. ओके, and create a private version, perform mass data entry in the story page, and use flow data entry mode in the table, in a data table. Okay, so we have logged on. So previous exercise, you can copy this particular story we have already copied. We'll open the same story. We have A03 is the user. So here we'll go into the stories. We'll open the story which we have copied into our folder. You can go from the file also, or you can go from the story also. Yesterday what we did is we have went to this page and we did cell log, value log, right? Yes, sir. Okay. That part we have applied, and we did manual entries, I mean manual planning. We copied from actual to private plan 03, we have copied the data entry, right? That's what we did. Yes. So in the same story further, we are going to do this. Okay, so display tab bar and then go to the mass data entry page, and then in the toolbar select down arrow next to the display. So I will go into the edit mode of the same story. We have opened the story.
and then display the tab bar and then go to the mass data entry page. Okay, so here what it is meant to say is what it is telling in the toolbar. Here we are in the toolbar and select the down arrow next to the display. So from here we can go to the mass data entry page. Okay, create a private version. So switch to edit mode. We already switched into the edit mode. Yes. And on the upper right, select edit. We have already done this. Now create a private version. So we'll go and create a new private mass version. Okay. So I will do is right click on top of the actual and select copy version. So from here you can do it. Select the table, select this three dot, and from here you can go to the version management. And from here you can see the actual is there. So using this copy button, you can do it. Why I'm doing from here? Reason because we have already filtered the data into our in the test segregation we have used different Right click. Yes. version over there, right? But in mass data entry still it is there. Okay, so this time Yes. I'm trying to show you from here how you can do it from here. You can also right click on top of the actual here and then go into the version and copy version. Copy version. So Yes. both the button will do same work basically for you. Okay. Okay. So while giving interview, you can tell any option. Okay. Category should be planning, so we'll use plan. And select data to copy. So copy all data. We have selected. So once you copied it, so data is going to be visible over there into the right. Okay. So here you can see this private mass plan 03 is added over there, and data is copied as it is same as actual. So you can go back into our right side panel. So you can close this version management using this close button. Open right side panel. And here in the version, you can go into the version and either way you can do it. Okay. So you can click into this filter button. यहाँ से भी आप जाएंगे तो same place में जाएंगे. Okay. And if you go into the filter tab or if you select the version, तभी वो same place में लेके जाएगा. Okay. So deselect actual only private mass plan 03 which we have created. We want to see the data for that. Okay. So private mass plan 03 and it is copied from the actual, the same data is visible over there. Yes. Now exclude the actual version, so we have excluded. Okay, so either right click on top of this and you can exclude the member, or like I have filtered वैसे भी कर सकते हो. Both the way is same. ठीक है. Now perform mass data entry in the story page.
ठीक है, टर्न ऑन द मार्ज डेटा एंट्री फॉर द टेबल्स। तो अभी आप देखोगे यहाँ पे इफ यू सेलेक्ट द टेबल, इफ यू गो इनटू द डाउन, अभी यहाँ पे व्हाट इज द ऑप्शन सेलेक्टेड इज डिफॉल्ट डेटा एंट्री मोड इज सिंगल डेटा एंट्री मोड। ठीक है, so here you have to select the mass data entry mode. Okay, so if needed, highlight the data table, select the more action option in the right table, and then select mass data entry. So the process data and exit mass data entry button appears in the ribbon of the upper left above the tab bar. Okay. Whether you can do it from here or what else you can do is यहाँ से भी कर सकते हैं। बोलने का मतलब ये है कि you can select this particular button, okay, 3 dots, and from here select more option highlight in the table, select mass data entry, ये रहा इसमें, ठीक है, mass data entry। तो आप वो ऑप्शन भी सेलेक्ट करेंगे, then it will be the same thing, ठीक है। Okay. Yes. तो देखो आपका जो पेज है, you are in the mass data entry tab and you can see here process data and exit mass data entry, ठीक है। ये दो बटन आपके इनेबल हो गए, बाकी सब कुछ बंद हो गया ऑटोमेटिकली। Okay. So now you can change into the mass data, तो आप एक ही बार में सब कुछ चेंज कर सकते हो, ठीक है। Okay. तो Jan 2025 ऐप सब में 10 million we have to put it, ठीक है। तो किस में करना है हमको, ग्रॉस सेल्स, ग्रॉस सेल्स here, ठीक है। I will go and change the value over here. So 300M, 300M। तो जब भी मैं मास डेटा एंट्री करूंगा तो वो एक साथ आपका डेटा चेंज नहीं होगा, ठीक है, जब तक मैं उसको प्रोसेस नहीं करूंगा। Okay. ठीक है, उसमें changes इट विल वेट फॉर टू प्रोसेस डेटा, ठीक है। अभी तक हमने जो भी किया था वो फ्लो डेटा एंट्री किया था, ठीक है। जैसे उसमें आप चेंजेस यानी रिफ्लेक्ट होते जाते हैं, जैसे हम चेंज करेंगे वैसे रिफ्लेक्ट होते जाएंगे ना। हाँ, फ्लूइड अभी वाले इसमें जब तक आप प्रोसेस नहीं करोगे जब तक वो चेंजेस नहीं दिखेगा आपका। ओके हाँ, ठीक है, दैट इज व्हाट द फ्लो डेटा एंट्री। If the data is shown above, the system does not process the data, new data because you are in the mass data entry. जब तक आप सारे चेंजेस नहीं कर दोगे and you will not process the data, it is not going to be changed. ओके। ये I mean safe होता है जब when you want to do the multiple changes in the one go. ओके। ठीक है, या आप लॉग करके भी कर सकते हो, you can log the data others and then you can do it, और या फिर this is the approach. ओके। Now process the data. So in the upper left, select the process data. So in the upper left side, you can see process data button is there. Once you click into the process data, उसके बाद आपका changes reflect होगा इधर। हाँ हाँ यस। ठीक है, अभी हुआ। तो ये है, so what is note is given is that in case the mass data processing doesn't work, do the following. First, select file, save your storage, then return to the SAP Analytics Cloud homepage in the Chrome browser and select reload page, and then reopen your story again. Okay, and again go to the mass data entry and repeat the step 1 to 3. That is what it is meant to say. Okay. So all changes are successfully submitted and operating income is updated. अब देखोगे कि ऑपरेटिंग इनकम अभी हमारा बढ़ के आ गया, 653 हो गया। पहले ज्यादा था, अभी कम हो गया। यहाँ पे हमारा 1035 था, राइट, 900 हो गया। तो यहाँ पे हमारा 2788 समथिंग वैल्यू थी, राइट, तो अभी घट गया हमारा 2653 हो गया। ठीक है, ओके, क्योंकि हमने वैल्यू कम कर दी। ये हमारे पास 300 समथिंग वैल्यूज थी, राइट, इसके वजह से। नाउ गो टू द वर्जन हिस्ट्री एंड सी कि कैसे हुआ। ठीक है, सो यू वांट टू सी द ओल्डर डेटा, सो यू कैन गो सेलेक्ट द टेबल, वर्जन हिस्ट्री, sorry,
वर्जन हिस्ट्री में जाना था, राइट। यहाँ पे हमको वर्जन सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। मास प्लान 03 सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो इसमें हमने डेटा एंट्री मास एंट्री करी हुई है, इसके पहले हम प्राइवेट वर्जन में थे, ठीक है। तो हमको ओल्डर डेटा दिखेगा पहले। एंड इफ यू गो इनटू द मास डेटा एंट्री, आफ्टर मास डेटा एंट्री आपका क्या चेंजेस हुआ डेटा में, यू कैन सेलेक्ट दैट पर्टिकुलर स्टेप एंड सी द डेटा। क्लियर है? यस। अभी फ्लो डेटा एंट्री मोड इन द डेटा टेबल। अभी हमने मास किया, फ्लो डेटा कैसे वर्क करता है। अभी तक हमने फ्लो ही किया था पहले भी, ठीक है। So if you have enable the mass data entry into your story, तो mass data entry वर्क करेगा बेसिकली। और फ्लूट करेंगे तो फ्लूट में भी वैसे करेगा। फ्लूट बेसिकली जैसे ये हायरार्की है, आपने अगर ये Q1 में चेंज किया तो ऑटोमेटिकली इट शुड गो इनटू द चाइल्ड आल्सो, ठीक है। यस। ये अपने चाइल्ड में किया तो उसका पेरेंट में भी अपडेट होना चाहिए। दैट इज कॉल्ड फ्लूट डेटा एंट्री, ठीक है। यस। ये है, ये हो गया। So open the right side panel in the data tables, highlight the data table and select right side panel. The builder panel opens on the right. Switch to flow data entry mode, ठीक है। ओके। अभी यहाँ पे you have selected it and now if you will select this particular three dots, तो जैसे यहाँ पे मास डेटा एंट्री था, ठीक है, जैसे आपको यहाँ पे फ्लो डेटा एंट्री नहीं दिखेगा, ठीक है। तो वो आपको कहाँ से करना पड़ेगा। सो इन द बिल्डर पैनल स्क्रॉल डाउन एंड यहाँ पे हम देखेंगे राइट साइड पैनल ओपन करके, ठीक है। फिर गो इनटू द डाउन, यहाँ पे हमारा हमने मास डेटा एंट्री किया था चेंजेस, राइट। तो ऑटोमेटिकली मास डेटा एंट्री हो जाता है, बट यू कैन मेक द चेंजेस ओवर। सो यहाँ पे फ्लो डेटा एंट्री कर देना है, ठीक है। फ्लो डेटा एंट्री and now you can enter the multiple values rapidly and the system will not process the new data until you finish typing, यस। ठीक है। मीनिंग क्या है कि यहाँ पे एक बार ये ओपन करके दिखा देता हूँ, ठीक है। आपको अगर यदि इसका आंसर भी चाहिए ना, सो यू कैन मूव इनटू दिस आई आइकन, ओके। आपको जो भी डेफिनेशन चाहिए ना, द डेफिनेशन यू विल गेट द आंसर फ्रॉम देयर, ओके। जहाँ भी आपको ये आई आइकन दिखा है, ठीक है, एंड यू नीड आंसर, कि बेसिकली ये है क्या, ठीक है। ऑलवेज पॉज। तो आप यहाँ पे आप आई आइकन पे अगर आप कर्सर मूव करेंगे ना, दोनों इंटरफेस विल टेक प्लेस इन द व्यू टाइम इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग इनिशियल लोडिंग, ठीक है। आप लर्न मोर में क्लिक करेंगे तो आपको help.sap.com में लेके जाएगा। वहाँ पे आपको पूरा डिटेल में उसका थ्योरी मिलेगा, ऐसे इसके लिए कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो व्हाट इज मीनिंग ऑफ प्लानिंग एनेबल, तो ये आई आइकन में आप जाके चेक करेंगे, सो यू विल गेट द आंसर ओवर देयर, ठीक है, ठीक है। यस। अभी कहाँ पे थे, यहाँ पे थे, ठीक है। डेटा एंट्री हमने कर दिया चेंज। नाउ change the following values. So enter the value as shown into the below. After a few seconds, system will process 3 records at the same time, ठीक है। तो हम ग्रॉस सेल्स में 300 मिलियन फिर से डाल देंगे, ठीक है। ये हम इसको रिवर्ट बैक कर देते वर्जन हिस्ट्री से।
So here what we'll do is we'll just check once. Flow data entry is there. Okay, अभी मैं यहाँ पे एंट्री चेंजेस करूंगा. जब भी आपको फ्लो डेटा एंट्री रहेगा तो इट विल वेट फॉर योर चेंजेस. ठीक है, 300 डाल दिया एम. ठीक है, 300 एम डाल दिया. ठीक है, आपका वो वेट करेगा until you are not entering all the values. ठीक है, 300 एम. ठीक है, यहाँ पे 300 एम. फ्लो डेटा एंट्री में देखो जहां जहां मैं एंट्री चेंज कर रहा हूँ बेस्ड ऑन द दैट इट इज गेटिंग रिफ्लेक्टेड इनटू द केसेस. मास डेटा एंट्री में भी ओवरऑल इट इज गेटिंग चेंज बट at flow data entry until unless you are not making full changes it is not getting changed. It will take a while to update the entries. Yes. ठीक है, that is what it meant to say. ठीक है, इसमें इतना ही था. Let's see the story. What is next exercise is data point comment. ठीक है, so in this exercise basically you need to know how to use the data point commenting features of SAP Cloud to improve the collaboration of your planning process. ठीक है, आप particular place पे data point बना के you can add the comment कि ये this number is coming based on certain reason or certain purpose. तो जब आप उसको business user से share करेंगे so at that time business person can move the eye icon and then they can understand कि what exactly it meaning. Okay. जैसे यहाँ पे ये सब कमेंटिंग ही है. ये जो दिख रहा है ना हमको, जैसे मैं यहीं पे मूव कर रहा हूँ कर्सर, so what the information is coming that is called commenting only. Okay. What is the flow data entry mode is process all new data changes at the same time if they are made in a fast sequence. ठीक है, single data entry means process each new data changes immediately. Mass data entry means process all new data changes when you confirm that you have finished with the entering values. ठीक है, अब वहां से सबका पूरा मीनिंग यू कैन अंडरस्टैंड. ठीक है, आप जैसे प्लानिंग इनेबल्ड है राइट. सो व्हाट इज मीनिंग ऑफ प्लानिंग इनेबल्ड, व्हाट इज मीनिंग ऑफ डेटा सिक्योरिटी. ठीक है, डेटा सिक्योरिटी का मतलब क्या है कि डेटा लॉकिंग. सेल दैट आर लॉक्ड आर रिस्ट्रिक्टेड बाय डेटा लॉकिंग विल बी शोन एज रीड ओनली. वैलिडेशन रूल. ठीक है, वैलिडेशन रूल अभी हम आगे की एक्सरसाइज में करेंगे. ठीक है, हाउ कैन क्रिएट अ वैलिडेशन रूल. ठीक है, डेटा एक्सेस कंट्रोल आप कैसे करेंगे. ठीक है, डेटा एक्सेस कंट्रोल में देख लिया राइट, हाउ यू कैन रिस्ट्रिक्ट द डेटा एट कोड लेवल से ऑर्ग लेवल राइट. वो हमने किया था. एक यूजर बना के फिर दूसरे उसमें लॉगिन करके हमने चेक किया था राइट. यस मैम. 2 बार कर लिया हमने वो चीज, सेम है, सेम ऑप्शन. So in this exercise basically we are going to create a new story, create a new public version, work with the column comments, work with the data point comments and use the comment widget. ठीक है, so copy the comment story to access this particular scenario from SACS 21 content folder. So we'll just save this story on the files.
So there is a story. P00S comment scenarios, right? We'll copy this story into our, यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे model भी हैं and there is a story also. So we'll copy the story in our folder and then we'll play around with it. So now open the same story and then go into the edit mode. We will go into files, our folder, and we'll open the story. And we'll go into the edit mode. Okay, so here we do have multiple pages created. One is overview, so key assumptions are there. We do have a comment columns. In this we do have a table created and we do have a data point comment. इसमें भी हमारे पास table created है, ठीक है? So यहाँ पे देखो ये already किया हुआ है, highlighted, ये color दिख रहा है, right? Yes. There is something over there. So if you move your cursor, आपको ऐसे values दिखेंगे, okay? But let's see what is there into this story. Now create your own private version. So go to the comment column page. So we'll go into the comment column page and select the data cell and copy the actual data to the private. So we'll go and अभी हम पहले data copy कर लेंगे नए वाले पे and then we'll play around with it. Okay. उसका नाम रहेगा then click on OK. So that will copy the changes. Work with column comment. So add the column comment for Q1, Jan, Feb and March. So 4 comments column are added. Q1, Jan, Feb and March. Add the following comments in Q1. Athlete sorts, Northeast. Gross sales for 2023 Q1. Sorts, Northeast for this is the way you can add the comment over there. Okay. So what we'll do is we'll exclude the actual version from here. Exclude members. So हमने जो भी नया वाला version we have created in this, we'll play around with it. Okay. So यहाँ पे Q1 athlete Q1 athlete sorts Northeast. Okay. फिर Northeast athlete sort. यहाँ पे ठीक है. Right click on top of it and कई बार आपको पूरे ऑप्शंस नहीं दिखेंगे, ठीक है? So what you can do is you can go into the full screen, तो आपको सारे ऑप्शंस दिखेंगे, ठीक है? Cut, copy, paste overall values, version, right? Distribute values, drop sales, filter, exclude, add data point comment, sort options as there,
create top and values, threshold you can define, create compass simulations, you can use table functions. टेबल फंक्शन में फर्दर फिर बहुत जो हम इधर से 3 डॉट से देखते हैं वो सारे ऑप्शंस आपको यहाँ से दिख जाएंगे. ओके, हमने कमेंट ऐड करना है. सो एक्सरसाइज सॉल्यूशन में जाते हैं. ठीक है, देखो इधर we have copied it and add comments. So right click on athletes quarter one and choose add client calculation comment repeating. Okay, 4 comment columns are added quarter one Jan, Feb and March. ठीक है, कहाँ पे बोल रहा हूँ, right click on athlete sorts of quarter one, right click on top of this and here you have option add and calculation and here you have option is to add the comment. ठीक है, and repeating. So when you select a repeating, so you can see how many columns are getting highlighted. Okay, if you select a single तो खाली उसी में आएगा. ठीक है, अगर आपने रिपीटिंग कर दिया तो जहाँ जहाँ पे रहेगा वो एथलीट शॉट्स सारी जगह पे आपका कमेंट आ जाएगा. ठीक है, देखो हमारे पास साइड में कमेंट कॉलम ऐड हो गया. ठीक है, जहाँ जहाँ हमारा एथलीट शॉट है सब जगह साइड में कमेंट कॉलम ऐड हो गया. ठीक है, नाउ add the following comments over there. ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में जाके यहाँ पे you can double click into it and then आपके यहाँ पे ओपन हो जाएगा. ओके, जैसे हमारे एक्सेल में आपको बोल्ड में लिखना है. ओके, you want to change the coloring part, these things you can change it according to your business requirement. ठीक है, ऐसे करके आपको ऐड कमेंट कर देना है. so when you add up the comment वो जाके रिफ्लेक्ट हो जाएगा. ओके, सो क्लोज करेंगे तो ऐसे आपको दिख जाएगा. ओके, so double click in the comment cell order one this not this, type the provided comment, choose add comment, so the data point comment डाला. एक बार ऐड करने के बाद you can change it. If you want to add up further more, so you can do it again. So again double click into it or right click into it. अरे डबल क्लिक कर सकते हो या राइट क्लिक करोगे तो it will open again for you. ठीक है, yes, if you want to make the changes. Add the following comment on Jan athletic sorts and northeast. Athlete sort Jan में करना, right? Okay. Yeah. So same way, you just copy paste it.
ठीक है। सिमिलर वे ऑन एथलेटिक शॉर्ट्स नॉर्थ ईस्ट फॉलोइंग कमेंट एंड उसी में और ऐड करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, ठीक है, तो इसी में जाना है। डबल क्लिक इनटू इट। जैसे आप डबल क्लिक करोगे तो दोबारा से मिलेगा एंड यू विल सी एट व्हाट टाइम व्हाट कमेंट हैज बीन एडेड। यस। तो दोनों कमेंट्स दिखेंगे। दैट्स व्हाट इट मीन टू से। ठीक है, पहले हमने बोला कि 1% ड्यू टू अवर न्यू मार्केटिंग स्ट्रेटेजी and gross sales for 2023 Gen shorts are expected to rise 1.5% due to our new marketing strategy. ओके। ठीक है, तो आपको वहां पे दोनों कमेंट्स दिखेंगे। देखो यहाँ पे विद द टाइमिंग। यस। ठीक है, तो सेव द स्टोरी। वर्क विद सेल वेस्ट कमेंट। ठीक है, अभी तक हमने क्या किया था कि वी हैव एडेड द कमेंट एट कॉलम लेवल पे। अभी सेल लेवल पे मींस पर्टिकुलर रिकॉर्ड पे हमको करना है, राइट? ओके। सो हाउ यू कैन डू इट? So navigate to the data point comment page and change the table filter from version actual to this। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे जाएंगे ये वाले पेज पे। ओके, एंड यहाँ पे you can go into the table function version या फिर फिल्टर में जाके राइट साइड पैनल ओपन कर लो, बिल्डर पैनल, एंड यहाँ से वर्जन में फिल्टर लगा दो। ओके, हमने जो नया वाला वर्जन यूज किया था वो वाला वर्जन आप फिल्टर आउट कर दो। इस वर्जन में select the data cell in the builder panel, go to filter area, change the filter version to this. Now click the comment indicator in the quarter one affiliate sort sales for north is to display the comment। okay, यहाँ पे quarter one affiliate sort and northeast यहाँ पे। ठीक है, if you move your cursor over there, display the comment। so how you can do is हमने इन दो प्लेसेस पे हमने कमेंट डाले हुए, राइट, इन द कमेंट कॉलम। यहाँ पे हमको देखो वो ऐसे एरो बन के आया हुआ है। ठीक है, यस। it is highlighted over there। so if you right click on top of this and from here यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है क्या?
नहीं देखिए, let's see, सही तो ठीक है। वन सेकंड। हाँ, रिकॉर्डिंग resume। So when you open the right side panel over here, हमने यहाँ पे क्वार्टर 1 2023 लिया, नॉर्थ ईस्ट। अच्छा, मैंने 2 ले लिया है, इस वजह से नहीं जा रहा है। Let me remove southeast, okay? And हमारा जो हायरार्की था, let me just add once again, ठीक है? थोड़ा सिस्टम स्लो चलता है, ठीक है? डोंट गेट फ्रस्ट्रेटेड। मतलब उधर से एसएपी की तरफ से प्रॉब्लम चल रहा है थोड़ा सा। आई हैव रेज्ड द टिकट मल्टीपल टाइम, बट उनका कुछ 2 बार उन्होंने सॉल्व कर दिया है, ठीक है? बट स्टिल स्लोनेस है ही, ठीक है? हमको थोड़ा सा पेशेंस के साथ करना पड़ेगा, ओके? इन प्रोडक्शन सिस्टम इट डज नॉट हैव दैट इशू, ठीक है? हमारा नॉर्थ ईस्ट में अगर मैं इसका ओपन करूंगा, यहाँ पे आना चाहिए, ओके? द डेटा पॉइंट इज, यहाँ पे एक एंट्री दिखना चाहिए मुझे, बट आई डोंट नो व्हाई इट इज नॉट विजुअल, ठीक है? जैसे हमने उधर किया था ना, व्हेन यू हैव एंटर्ड द वैल्यूज इनटू द डेटा पॉइंट, ठीक है? वो आपका कमेंट कॉलम में जाके बैठ गया था, राइट? सिमिलर वे इट विल आल्सो सिट इनटू दैट, ठीक है? एक बार हम इधर से डेटा पॉइंट में जाके चेक कर लेते हैं। इफ विल जस्ट क्लिक इनटू द ये मैंने क्वार्टर 1 में किया था ना, ये यहाँ पे किया है। पता नहीं क्यों नहीं ऐड हो रहा है वो, मुझे मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ उसमें। बट दैट विजिट यू कैन सी इट फ्रॉम हियर, ठीक है? तो हमने क्या किया बेसिकली, हाउ वी डिड इट, वी हैव एडेड द विजिट एंड एडिंग दैट विजिट। सो आप भी इसमें फिल्टर डाल के, इंडिविजुअल फिल्टर डाल के यू कैन सी द डेटा। सो व्हेन यू सिलेक्ट योर टेबल, यहाँ से फ्रॉम हियर इटसेल्फ यू कैन आइडेंटिफाई द थिंग्स, ठीक है? कि आपका अकाउंट कौन सा है, वर्जन कौन सा है, एंटिटी कौन सी है, एंड देन डेट फील्ड कौन सा है, ठीक है? अकॉर्डिंगली। सॉरी, एक चीज मैं क्यों कंफ्यूज हो रहा हूँ बोल रहा हूँ, एंटिटी जो हमारा है अंदर यूनाइटेड स्टेट, ईस्ट यूएस के अंदर था, नॉर्थ ईस्ट, राइट? करेक्टली है, बट आई डोंट नो व्हाई इट इज नॉट गेटिंग एडेड। यहाँ पे आके ऐड होना चाहिए था वो, ठीक है? दैट्स व्हाट माय अंडरस्टैंडिंग, बट पता नहीं क्यों नहीं जा रहा है वो, ठीक है? वही समझाने का ट्राई कर रहा था इसमें, ठीक है? ठीक है, लेट्स से द स्टोरी। तो इसमें खाली कमेंट कमेंट का काम था कि हाउ कैन ऐड द कमेंट्स, ठीक है? using your cell, using your particular column, how can do it, वो सारी explanation थी इसमें, ठीक है? अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या है हमारी, प्लान विद इनवर्स डायमेंशन फॉर्मूलाज, ठीक है? तो ये हम कल करते हैं, ठीक है? इसके बाद हमारा कितना एक्सरसाइज बचा हुआ है, एक्सरसाइज 9। उनके बाद हमारे 14 है टोटल, राइट? प्लान विद इनवर्स डायमेंशन, डिस्ट्रीब्यूट डेटा विद प्लानिंग। तो ये वाले वीक में हम ये वाला कंप्लीट कर देंगे मोस्टली, ठीक है? So we'll continue from here, okay, tomorrow.